Okay, so today we'll see application of matrices, how to apply this that we have learned inverse or how to find inverse of matrix, right? Then elementary transformation, all that things we'll see how to apply here. Then in this application of matrices, there are two methods. First one is method of inversion and second one is a method of reduction. Okay, now uh, this method of inversion and method of reduction or application of matrices we are using for equations. Okay, for equations means there are x y z equation solve करना मतलब क्या होता है, solving that values of x y and z variables, right? Okay, so first we'll see method of inversion. For these are steps. First, equations write in the form x is equal to b in this matrix form. Okay, equations write in the form x is equal to b. Then in inversion method find a inverse by any method. A inverse हम लोग adjoint method or use elementary transformation of row or column. Okay, in any by using any method find out value of a inverse. Then write x is equal to b. Then pre-multiply by A inverse. So we'll get A inverse into A into X is equal to A inverse into B. Okay. So A inverse into A means what? Identity matrix. So I into X is equal to, we'll get A inverse into B. And identity into any matrix means that matrix only. So matrix that X is equal to A inverse into B. Now after multiplying A inverse into B, this matrix will get value of X means XY. When there are two equations, values of xy, and when there are three variable equations, then x, y, z, values of x, y, z that we want, right? Now this is inversion method steps. Now we'll see method of reduction. In method of reduction also, first write equations in the form x is equal to b, then reduce matrix A in upper or lower triangular matrix. Reduce matrix A in upper or lower triangular matrix. Mostly easy one is upper triangular matrix. Okay, mostly reduce matrix in upper triangular matrix, that is easy one step. Okay, then by equality of matrix, okay, by equality of matrix you will get values of z, then y, put one by one values and find x, y and z. Okay, now these are two methods. So now we'll see for first one example how to use this method of inversion and method of reduction. We'll start with method of inversion. Okay, now we'll see question number 1. Solve the following equations by the method of inversion. Your first one equation is given by equations x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. These two equations. And we have to solve this by method of inversion. Solving the equations means what? Find the values of these variables, right? X, y here. Two equations and two variables. Okay, so we have to solve for these two equations by method of inversion. Now this method of inversion, these are the methods, these are the steps, right? Equations first in write in the form x is equal to b, right? Then find A inverse, then x is equal to b, pre-multiplying by A inverse, and this all things, right? So first we'll start with this. Okay, first equations in the form x is equal to b, right? X is equal to b means here a means what? This coefficient of x, here 1, here 2 and here 3, right? X means what? X means variables, given variables, two variables only, so x and y. Then b means is equal to here 2 and here 3. Okay, now in the form x is equal to b. Now we have to find out A inverse. Okay, हमें यहाँ पे अभी A inverse find out करना है. For finding A inverse हमें क्या find out करना पड़ता है? Determinant. So to find A inverse, our A is this, right? So find determinant of A. 2, 3. Okay. 3 ones are 3 minus 2 twos are 4. So 3 minus 4 is
minus 1, which is not equal to 0. Means what? A inverse exists. Now after this you can use any method, reduction of elementary transformation method, otherwise adjoint method, any method, and find value of A inverse. Now here I am using elementary transformation method, elementary transformation of row method for finding A inverse. So we write or we consider here A into A inverse is equal to identity. That is the procedure of elementary transformation method, right? So A into A inverse is equal to identity. So our A is 1, 2, 2 and 3, right? Here A inverse as it is, and identity matrix, यहाँ पे 2 cross 2 matrix है, so here 2 cross 2 identity matrix, right? Now क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ए को, सो वी वांट हियर 0, राइट? सो R2 चेंज होगा, R2 implies R2 minus 2R1, right? 2 into R1, so 2 minus 2 will get 0. So our matrix become R2 change होगा, so R1 write down as it is, A inverse as it is, here also R1 as it is. So क्या change हो रहा है? R2 here 2 3, right? 2 3 0 and 1 minus 2 R1, 2 into R1, so 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 into 1 2, 2 into 0 0, so 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 0 minus 2 minus 2 and 1 minus 0 1, so you'll get 0 minus 1 minus 2 and 1. Okay, now after this we want here 1. हम लोग क्या करते हैं? जब रो थ्रू जाते हैं तो रो करे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करे तो कॉलम थ्रू जाते हैं, राइट? सो फर्स्ट कॉलम कर लिया मैंने 1 0. आफ्टर दिस यहाँ पे क्या करना है? पहले 1 करके लेना है. सो R2 चेंज होगा, R2 implies R2. ये 1 कब होगा? जब मैं इसको -1 से डिवाइड करूंगी, जो -1 डिवाइड बाय -1 विल गेट इक्वल टू 1. सो R2 डिवाइड बाय -1. ओके, सो 1 2 matrix R1 as it is, 0 -1 divided by -1 1, A inverse is equal to ये 1 1 1 0 R1 as it is. इसको क्या करना है? यहाँ पे भी R2 को चेंजेस होगा, -1 से डिवाइड करूंगी, -2 डिवाइड बाय -1 2 and 1 minus 1 divided by -1 -1. ओके, नाउ आफ्टर दिस क्या चेंज करना है? यहाँ पे 0 करके लेना है, राइट? सो R1 चेंज होगा, R1 minus 2 R2, right? minus 2 R2 करूंगी तो 2 minus 2 will get 0. Okay, therefore next R1 change होगा, so R2 write down as it is. ठीक है, so R1 means this 1 2 1 and 0 minus 2 into R2, so 0, 2 into 1 2, 2 into 2 4 and 2 into -1 -2. Okay, 1 minus 0 1, 2 minus 2 0, 1 minus 4 -3 and 0 minus -2 is +2. So 1 0 -3 and 2. Get this. This means what? Identity matrix, identity into A inverse, right? This -3 2 2 and -1 means value of A inverse is what? -3 2 2 and -1. Now after finding this A inverse, next step is what? We'll write Ax is equal to B and pre-multiplying by A inverse, right? Pre-multiplying by A inverse. So we'll get A inverse into A into X is equal to A inverse into B, right? This means what? Identity matrix into X is equal to A inverse into B. Means I into any matrix is X only. So X is equal to A inverse into B. Now put values here. Value X is what? Here only X and Y. A inverse find out किया था, -3 2 2 and -1 and B. Our B is 2 and 3. Okay. Now multiplying this two matrix. ये कौन क्या है? 2 cross 2 है, ये 2 cross
1 है मीन जो आंसर आएगा 2 क्रॉस 1 रहेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन. ओके, -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 2 जा 6, राइट. नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस -1 into 3 -3. So I'll get here -6 plus 6 0 and 4 minus 3 1. Okay, means values of x and y, x is equal to 0 and y is equal to 1. That implies by equality of matrices x is equal to 0 and y is equal to 1. These are two values. Okay, again we'll see procedure. Equations of the equations in the form x is equal to b, write down first, then find a inverse. For finding a inverse, find out determinant. When determinant is not equal to 0, then only our a inverse exists, right? After that, obviously you can use any method for finding a inverse. यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो यूज किया. आप एडजॉइंट मेथड भी आपको इजी लगता है तो वो मेथड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम भी यूज कर सकते हो. ओके, सो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो यूज करके इनवर्स फाइंड आउट किया इन दिस वे. आफ्टर दैट write down ax is equal to b pre multiplying by a inverse. So x is equal to a inverse into b. तो मैंने पुट किया वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी और ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए. सो विल गेट दिस ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, वेरिएबल्स. नाउ विल सी वन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन मेथड. Okay, now we'll see one question number 2. Solve the following equations by the method of reduction. Here question number 1, 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 5y is equal to -3. Okay, first step in this reduction method is obviously same as inversion method. Equations in the form, right, x is equal to b format में यहाँ पे भी लिखना है, right? So 2 coefficient of y 1, your coefficient of x 3, coefficient of y 5. Okay, only two variables x and y, and b is your 5 and your -3. Okay, now after this next step in reduction method is what? Reduce this matrix A in upper triangular matrix or lower triangular matrix. But क्या मैंने बोला था आपको कि अपर ट्रायंगुलर इज इजी वन. ओके, अपर ट्रायंगुलर इज इजी वन. अपर ट्रायंगुलर मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपको एलिमेंट रखने मीन्स हमें क्या करना है, ये 3 की जगह पे 0 करके लेना है. 3 के जगह पे 0 करना है, राइट. नाउ वी वांट हियर 3 के जगह पे मीन्स 0 करना है मीन्स व्हाट? कुछ तो चेंजेस करना है. 3 - 3 0 हो सकता है, राइट. सो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट क्या करेंगे हम? R2 को फर्स्ट वी R2 इंटू 2 करेंगे. सी 2 इंटू R2. सपोज 2 इंटू R2 कर रहे हैं. सो सी विल गेट हियर R1 एज इट इज, एक्स वाई भी एज इट इज रहेगा, ठीक है. सिर्फ जो चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बी के साथ भी होगा, ठीक है. 5 एज इट इज. क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 2 6, ये 5 2 10 और 3 -3 इंटू 2 -6. ओके, नाउ 2 के टेबल में है अभी 6. ओके, सो क्या R2 इम्प्लाइज R2 माइनस क्या करना पड़ेगा? 3R1. R2 minus 3 into R1. Okay, R2 implies R2 minus 3R1. So R1 will write R1 as it is. Here 2 1 XY भी as it is रहेगा. After that B में भी सिर्फ R2 चेंज होगा. So R1 as it is 5. Okay, क्या करना है? R2, our R2 is 6 10 जो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था एंड -6, राइट. -3 इंटू R1. सो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 5 5 3 जा 15. 6 - 6 0, 10 - 3 7 and -6 -15 -21. So we get 0 7 and here -21. ओके, नाउ हो गया अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्जन गिवन मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का. सो
by equality of matrices, by equality of matrices, okay, we'll get what? 7y is equal to minus 21, right? 7y is equal to minus 21 means y is equal to what? Minus 21 divided by 7 is y is equal to minus 3. And second equation is 2x plus 1y, right? Means y is equal to 5. Okay. Now putting this value of y is equal to minus 3, 2x, this minus 3 is equal to 5. Means 2x is equal to what? 5 plus 3. So 2x is equal to 8. Means x is equal to what? 8 divided by 2, 4. Now these are the values of x and y. X is equal to 4 and y is equal to minus 3. Procedure is what? First write in the form x is equal to b. Then reduce matrix A in upper triangular or lower triangular matrix. First mostly prefer upper triangular matrix. Then by equality of matrices we will get values of x and y. This is second second method of application of matrices, that is method of reduction. Okay, now we'll see one word problem of this application of matrices. Okay, now we'll see one word problem here. Question number 3. The cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. Then the cost of 2 pencils, 4 pens and 6 eraser is rupees 90. And the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 eraser is rupees 70. We have to find out the cost of each item by using matrices. Okay. Now first we'll assume let the cost of 1 pencil, 1 pen and 1 eraser be रुपीस, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक्स, सपोज रुपीज वाई एंड रुपीज जेड रिस्पेक्टिवली. ओके, सपोज कॉस्ट है 1 पेंसिल 1 पेन और 1 इरेजर की भी. 1 पेंसिल की एक्स, 1 पेन वाई एंड 1 इरेजर है जेड रुपीज है रिस्पेक्टिवली. ओके, नाउ देन from the given conditions, now we'll see given conditions. Okay, now some conditions are given in our question, our problem, right? So we'll see that condition. First condition, the cost of 4 pencils, 3 pens and 2 eraser is rupees 60. Okay, so means 4 into x, क्योंकि 1 पेंसिल की रुपीज प्राइस क्या है x रुपीज. सो 4 इंटू एक्स प्लस 3y, राइट, 3y प्लस 2z is equal to what? 60. Now second condition is this, right? 2x plus obviously 4y plus 6z is equal to 90. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y प्लस 3z हो सकता है इज इक्वल टू 45 हो सकता है. ऑल आर डिविजिबल बाय 2. सो विल गेट दिस इक्वेशन. नाउ आवर थर्ड कंडीशन इज कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स मीन्स x 6x प्लस 2y प्लस 3z is equal to what? Rupees 70 is equal to 70. Now we'll have these 3 equations with 3 variables, right? So first हम लोग क्या करते हैं? By solving equations application, first we have these equations in matrix form. So this equations can be written in the matrix form as, now I am writing here in matrix form, coefficients of x y z, coefficients of again second equation x y z, again here coefficients of x y z. Here matrix A means यहाँ पे 3 variables है x y z. This matrix x is equal to obviously first में 60 था, यह 45, यह 70. Okay. Okay, after this
You can use any method of reduction or inversion, but I think so reduction method is easy as compared to method of inversion, right? So हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना है, मीन्स व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बट आई एम यूजिंग योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मोस्ट प्रिफरेबल. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मीन्स व्हाट, यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे, ये 3 जीरो करने हैं, राइट, दिस 3 जीरो करने हैं हमें, ठीक है. बट यहाँ पे 1 2 3 है, सो यहाँ पे 4 है, 3 है. सो हम लोग क्या करेंगे, 1 चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए. सो इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो. सो मैं क्या कर रही हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज करके ले रही हूँ. सो वो मोर कंफर्टेबल भी रहेगा सॉल्व करने के लिए आगे. सो R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर रही हूँ मैं. XYZ एज इट इज रहेगा, इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना है. नेक्स्ट R3 एज इट इज रहेगा, दिस 6 2 3 एंड दिस 70 ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 45. यहाँ पे रहेगा 4 3 2 एंड here 60. ओके, नाउ आफ्टर दिस R2 चेंज कर रहे हैं, पहले यहाँ पे 0 करके लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे भी 0 करके लेते हैं, ठीक है. तो इसके साथ आराम से हो जाएगा. इसके लिए मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है. R2 चेंज होगा ऐसे कि R2 माइनस 4R1. सेम फॉर द R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 6R1, राइट. सो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा. एक साथ वो 2 0 हो जाएंगे. इसके लिए मैंने R1 को R2 के साथ चेंज कर लिया, ठीक है. XYZ एज इट इज रहेगा हमारा. मेरा क्या चेंज हो रहा है, R2 R3 दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है. सो R1 एज इट इज रहेगा, लेकिन सो मैंने R1 लिखा. नाउ R2, अवर R2 इज दिस 4 3 2 एंड 60. 4 3 2 एंड 60 माइनस क्या करना है, 4 इंटू R1. सो 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 6, 4 3 जा 12. Then 4 into 45 is, right, 180. 45 2 is 90, 92 is 180, right. 4 minus 4 0, 3 minus 6 minus 3, 2 minus 12 is minus 10, and 60 minus 180 is minus 120, right. So I'll get here 0 minus 3. Sorry for this. 4 3 is 12 and 4 4 is here 8, right. 4 2 is 8. यहाँ पे 8 होना चाहिए था, sorry. 8 3 minus 8 is minus 5. So here minus 5, here minus 10, here minus 120. Okay. Now after this, we'll see for this R3. R3 is 6 2 3 and 70. माइनस क्या करना है, 6 इंटू R1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 and here 45. Then 45 into 6 is 270. 6 minus 6 0, 2 minus 12 minus 10, 3 minus 18 is minus 15 and here 70 minus 270 is minus 200 हो जाएगा, ठीक है. सो 0 minus 10 minus 15 and minus 200. ओके, नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे 2 0 हो गए. नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे 0 करके लेना है minus 10 की जगह पे. सो मेरा क्या चेंज होगा, R3 चेंज होगा. R3 इम्प्लाइज R3 माइनस क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कर सकते ऑपरेशन. 5 2 is 10 एंड माइनस माइनस है दोनों, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा. R3 माइनस 2 इंटू R2, राइट. 5 2 is 10, 10 minus 10 0. सो सिर्फ मेरा R3 चेंज हो रहा है. सो R1 R2 आई राइट डाउन एज इट इज. XYZ X मैट्रिक्स राइट डाउन एज इट इज. Here 45 minus 120. यहाँ पे क्या करना है, R3, our R3 is this 0 minus 10 minus 15 and this minus 200
minus 2 into R2, 0 minus 5 into 2 minus 10, right? Minus 10 into minus 10 into 2 minus 20, right? And here 120 into 2 240, right? माइनस 240 हो जाएगा, ठीक है. 0 माइनस 0 0 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 0 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 20 मीन्स 20 माइनस 15 5 एंड हियर माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस, तो 240 माइनस 240, so we'll get 0 0 5 and 40. So this is your upper triangular matrix. Okay, now after this, by equality of matrices, we'll get here three equations: x plus 2y plus 3z is equal to 45, right? Next here minus 5y plus, obviously minus 10z is equal to this minus 120, right? And last equation we'll get here 5z is equal to 40. These three equations. So we are starting with this 5z is equal to 40, means that implies z is equal to, we'll get 8, right? Now putting in this equation, so we'll get minus 5y minus 10z is equal to 120, minus 120. So minus 5y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, minus 10 into this 8 is equal to minus 120, means minus 5y minus क्या हो जाएगा 80 is equal to minus 120, means minus 5y is equal to क्या आ जाएगा minus 120 plus 80, right? minus 120 plus 80 means हो जाएगा ये 40, right? minus 40 हो जाएगा. So we'll get y is equal to what? minus 40 divided by minus 5, again y is equal to 8. So z is equal to 8, y is equal to 8. We are putting these two values in equation number 1, that is x plus 2y plus 3z is equal to 45. So x plus 2 into y is 8 plus 3 into, that is 8 is equal to 45. So x plus 16 plus 24, 8 3 is 24 is equal to 45. Here x plus क्या हो जाएगा 40 is equal to 45, means x is equal to what? 45 minus 40 is 5. Value of x is 5. Obviously value of x is 5, y is equal to 8, z is equal to 8, means what? Hence the cost of पेंसिल इज ₹5. फर्स्ट हम लोगों ने एज्यूम किया था एक्स किसके लिए, पेंसिल के लिए, मीन ₹5. देन कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹8. ओके, now understood. This is one word problem में मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया, assumption से. हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है उसको एज्यूम किया XYZ वेरिएबल से. यहाँ पे 3 दिए थे कुछ एलिमेंट्स, इसके लिए 3, जहाँ पे 2 दिए होंगे या वहाँ पे आपको 2 ही लेने हैं, ठीक है. आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, जो भी इक्वेशन फॉर्म हुए गिवन कंडीशन से वो इक्वेशन लिखे, फिर वो मैट्रिक्स फॉर्म में. आफ्टर दैट यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ रिडक्शन और इन्वर्जन मेथड से आपको क्या करना है, वो सॉल्व करना है. बट method of reduction is easy one. In that also you can use upper triangular matrix, convert in upper triangular matrix. Then by equality of matrices you will get this values x y z variables के values मिलेंगे. That is your answer.